Very important session in our series we call as rapid revision, the last lab है ये एग्जाम के लिए, right? The chapter we are covering today is light. This chapter many of students, बहुत students को लगता है chapter बहुत difficult है. Reason, there is so much content, which I agree. This chapter has lot of content. The only difference between you and grade 10th is numericals. Apart from that, content उतना ही है, लगभग उतना ही है, right? So that's one reason we feel this chapter is difficult. And the biggest problem is how to make notes, है ना? Notes कैसे बनाएं, practice कैसे करें, how to practice, what kind of questions to practice, exam में क्या आ सकता है, all of this. So I can promise you something. By the end of this session, let me tell you 3 things. I'll give you first, obviously we'll revise this whole thing. Under 30 minutes, we'll finish this whole chapter. That's one. Second, I'll give you homework questions for which answers you will be giving to me in the chat or comment section. Both works. ठीक है? अगर देखोगे प्रीमियर तो chat, otherwise comment section. Third, I will solve your problem of notes and practice questions. That's a deal. All right. So this is something which I'm promising you, and you have to just listen to everything I say very clearly, very properly by the end of the session. Till the end of the session, right? ठीक है, चलें. All right. Let's begin. भाई देखो, चैप्टर है लाइट का और स्टार्टिंग होती है. Light has a property we call as rectilinear propagation of light. ये ग्रेड 6 से चल रहा है कि यार you can always see things जब वो straight होगा. अगर pipe bend होगा you cannot see it, right? So light travels in a straight line, we understand that. And how do you see things around you? कैसे देखते हो? Either that thing is a source. तुम या तो directly sun को देखो, that is one way. Second, light from a source falls on an object and then the light gets reflected towards you. किसी सोर्स से लाइट फॉल करेगा एक ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो लाइट तुम्हारे पास पहुंचेगा, राइट? दैट लाइट विल रीच टुवर्ड्स यू एंड यू विल गेट टू सी, अच्छा ओहो यहाँ ऑब्जेक्ट है. दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट ग्लोइंग, दैट ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट कमिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स. इंपॉर्टेंट. फाइन. ये 2 तरीके हैं. ठीक है, फाइन. चलो नेक्स्ट आता है, अब कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, अगर wherever reflection happens, a law is followed. We call it the laws of reflection, not law actually, laws of reflection. 2 law हैं. बहुत direct question आता है ना? It's a very direct question asked in exams. What is laws of reflection? Let's see. By first is very simple. The light ray which falls on the surface is called as incident ray. The light ray which is getting reflected. What is reflection? Bouncing back of the light ray, है ना? Which is getting back, getting reflected. इसको बोलते हैं reflected ray. बीच में there is a imaginary ray which is 90 degrees to the reflecting surface. इसको हम बोलते हैं normal. वो होता है normal. ठीक? Angle of incidence is measured from normal. Angle of reflection is measured from normal. ये बहुत जरूरी चीज है. ठीक है? The angle between incident ray and normal is called angle of incidence, and angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. ठीक है? Now I is equal to R. ये है पहला लॉ. अगर रिफ्लेक्शन हुआ है, I will be equal to R. पक्का. Second, incident ray, normal at the point of incidence and reflected ray will all lie in the same plane. वो incident ray जो आई है और ये जो reflected ray है and the normal, they will all lie in the same plane. मतलब if incident ray is coming like this, reflected ray and the normal will be in the same plane. ऐसा कभी नहीं होगा incident ray will fall like this and reflected ray will go over here. It will never happen. Not possible, right? So incident ray, reflected ray and normal will lie in the same plane. चाहे ऐसे जाओ तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाओ तो ऐसे जाएगा. Fine, clear है? All right. So these are the 2 laws. Direct question will come. चलो next, types of images. There are 2 types of images which we usually come across. पहली, real image. असली image है ये, एकदम असली. मतलब light rays are actually meeting. Light rays जो है ना, they actually meet to form the real image. What kind of question comes? Give 2 differences between real image and virtual image. That kind of a question is usually asked. Reflected rays of light actually meet. That is real. Means in virtual, they appear to meet. They don't actually meet. They appear to meet. How is it possible? We have done this. Couple of times we have done this. है ना? If light rays, this is let's say a mirror, if light rays are coming like this, they will get reflected. भाई diverge हो जाएंगी वो तो. So on the left side of mirror, will they ever meet? No. उनको मीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? You will have to trace them back on the right side. तो यहाँ पर they appear to meet on the right side, but they don't actually meet. So this is
virtual image, where light rays don't actually meet, they appear to meet. Fine. Real में they actually meet. Fine. They are always inverted. Real images are inverted. Virtual images are erect. ठीक है, आपको erect image दिखती है मतलब virtual. So you can tell me the image of you inside the mirror in the morning which you see, dressing table mirror, कैसा है? वो image virtual है. क्यों? Because virtual images cannot be obtained on a screen, but a real image can be obtained on a screen. Real image के तीन क्या हैं पॉइंट सबसे जरूरी? Actually meet करती हैं, they are always inverted, and you can obtain them on a screen. Virtual की बात करें, virtual मतलब which is not real, असली नहीं है. स्क्रीन पे मिलेगा नहीं मिलेगा. जो virtual है वो स्क्रीन पे नहीं मिल सकता. जो virtual है that will be erect. जो virtual है the light rays they appear to meet, they don't actually meet. क्लियर हो गई बात, राइट? सो इन द मॉर्निंग द इमेज यू सी इनसाइड द मिरर, उसको तुम स्क्रीन पे ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो. सो दैट इज अ वर्चुअल इमेज. वेरी सिंपल. ठीक है, चलो आगे आओ. नेक्स्ट, वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मिरर्स इज लेटरल इन्वर्जन. लेटरल मतलब साइडवर्ड्स इन्वर्जन. क्या बोलता है ये? कि भाई आपकी ऑब्जेक्ट का राइट साइड विल बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज. मतलब इफ दैट इज योर लेटर, अगर वो आपका लेटर है ना, लेट्स से इफ आई नेम इट, मैं बोल देता हूं ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2. ठीक है, द इमेज ऑफ पॉइंट नंबर 1 विल बी, इमेज ऑफ पॉइंट नंबर 1 विल बी वहां पर कहां होगा? लेफ्ट साइड में. सो पॉइंट नंबर 1 का इमेज रहा ये. सो इफ कैन यू से द राइट साइड ऑफ योर ऑब्जेक्ट बिकेम द लेफ्ट साइड ऑफ योर इमेज? ट्रू और नॉट? है ना. सिमिलरली द लेफ्ट साइड, point number 2 will form an image over here. This is point number 2. The left side of your object became the right side of the image, and the right side of your object became the left side of the image. This is called as lateral inversion. ठीक है, इसको हम बोलते हैं lateral inversion. The image is laterally inverted in the case of a mirror. इसका application क्या है? Because of lateral inversion, ambulance पे ambulance उल्टा लिखा होता है. You might have seen ambulance पे ambulance is written inverted. Why? So that when you see the image of ambulance in your rear view mirror, you will see laterally inverted image, and then you will be able to read it properly. अच्छा, ambulance है, उल्टा थोड़ी पड़ेगा कोई. ठीक है, fine. So that's why this is called as lateral inversion, when the left side of your object becomes the right side of the image. ठीक. Properties of images formed by a plane mirror. Very direct question, very very common question. पहली चीज, प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. योर ड्रेसिंग टेबल मिरर, कभी तुम्हारी इमेज उसके बाहर आती है? नहीं बनती ना. इमेज इज ऑलवेज इनसाइड द मिरर. इट्स अ वर्चुअल इमेज. सेकंड, इमेज इज इरेक्ट. योर इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. तुम्हारा सर ऊपर होता है, इमेज का भी सर ऊपर होता है ना. इमेज इज इरेक्ट. सेकंड, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है. द ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज. Object distance equals image distance means in front of the mirror, whatever distance you have, that is the distance image has inside the mirror. ठीक, it's a very important properties. And the image is literally inverted. Same thing, right left. ठीक है, fine. चलो, अब mirrors तो यार सारे plane नहीं होते. It's not like all mirrors are plane only. We have curved mirrors also, right? So next topic is spherical mirrors. Spherical mirrors, क्यों? Why do we have word spherical? Because in their lifetime they were somehow a part of a sphere before. ये कहीं ना एक sphere से जन्म लिए हैं. If you have a sphere and you cut it, वो जो red colored dotted line है, let's say you cut this sphere, थोड़ा imagine करना पड़ेगा बच्चा. ये circle लग रहा है but ये 3D है, sphere है ये, ठीक है ना. So if you cut it like this, what will you get? तुमको मिलेगा बचा हुआ section something like this, है ना. जैसे ये है यहाँ पे, तुमको ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब इसके अंदर depends on which side you polish, it will become that type of a mirror. मतलब if you polish the outer surface, if you polish the outer surface of this mirror, अगर तुम इसका outer surface polish कर दोगे तो क्या होगा? Inside area, inside surface will be reflective. यानी कि अगर आप मिरर का outside surface polish कर देते हो, then this side will become reflective, है ना. This is what? A concave mirror. इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव्ड इन है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव्ड इन. इट्स लाइक अ केव इनसाइड, गुफा की तरह से है. ठीक है, कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स के अंदर उल्टा कर दो. अगर इफ कॉनकेव में द केव वाज रिफ्लेक्टिंग, इन कॉन्वेक्स द वेक्स इज रिफ्लेक्टिंग, द बल्ज इज रिफ्लेक्टिंग, है ना. तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर.
means polish क्या किया होगा? What would you have polished? You would have polished this side. So in convex mirror, this is inward side is polished and outside side is reflective. In concave, the outside area is polished and inside inwards mirror is reflective. ठीक है, ये बहुत जरूरी है पता होना. Fine, okay. Spherical mirrors, we have basic terms. What is it? भाई mirror, you know. And by the way, this mirror looks like an arc to you. It is not actually an arc. It's 2D. 3D में सोचो तो क्या होगा? In 3D, this would look something like this, है ना? ये कुछ ऐसा होगा. You are thinking it is like a circle, like an arc. It is actually a 3D figure, है ना? ठीक है? चलो. Next, the center of your mirror is the pole. तुम्हारा जो mirror है, उसका center part, geometrical center is the pole. ठीक है? जिस स्फीयर से ये निकला है, the sphere of which this mirror was a part of, center of that sphere is called as center of curvature. ये रहा center of curvature. Yes, okay. Line joining center of curvature and pole indefinitely is called as principal axis. ठीक है. Then we have radius of curvature. The distance between center of curvature and the pole is called as radius of curvature. स्फीयर में रेडियस क्या होगा? सोचो जरा, सिंपल सी बात है ना? ठीक है. All right. Now, we said converging mirror. Remember, this concave mirror was called as converging mirror. क्यों? If light rays parallel to principal axis fall on this mirror after reflection, क्या होगा? ये mirror इन सबको converge करवा देगा. This mirror will make them converge towards this point. तो ये जो point निकला है, this point is called as the focus or principal focus. Lines parallel to principal axis when fall on the mirror after reflection, they will converge at a point. This point is called as principal focus in a case of concave mirror. ठीक है, fine. तो इसको हम बोलते हैं focus. वो पॉइंट जहां पर लाइट रेज या तो कन्वर्ज करती हैं या फिर दे अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फोकस. फोकस हो रहा है. नाइस. चलो, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर. भाई कॉनकेव मिरर, अगेन आई टोल्ड यू देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस चैप्टर, बट लिसन वेरी केयरफुली. इन कॉनकेव मिरर केवल दो केस बना सकते हो तुम. वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज. अगर तुम कॉनकेव मिरर में बहुत नजदीक से देखोगे ना, when the object is kept very close to the mirror, what kind of image will you get? You will feel like यार इमेज तो प्लेन मिरर जैसा ही है लेकिन बड़ा है. Image will be virtual, erect and magnified, right? So wherever you want to see big image of an object, you will say I will use a concave mirror and keep the object very close to the mirror. ठीक है, इमेज कैसा होगा? Virtual, erect and magnified. अगर if the object is far away from the mirror, अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर रखते हो मिरर से, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर से, देन यू विल गेट अ रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और साइज डिपेंड करेगा कहां रखा हुआ है. ठीक है, फाइन. So in grade 10 it will be more clear, but I'm saying if the object is very close, you will get virtual, erect and magnified image. If the object is far from the mirror, then you will get real inverted image. Size depends on the position of the object. ठीक है, clear हो गया? Okay. अब कॉनकेव मिरर में तो ठीक है, वी हैड दीज टू टाइप्स ऑफ केसेस, बट अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ वेरी नाइस, वेरी पीस लविंग मिरर. कॉन्वेक्स मिरर बोलता है देखो हम आपको दिक्कत नहीं देंगे, बिल्कुल भी, हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे. आई विल जस्ट से आई एम गोइंग टू ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. हमेशा मैं बनाऊंगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज. एग्जाम्पल्स, रियर व्यू मिरर, है ना, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा. टिल नाउ वी हैव स्टडीड सो मच, राइट? नाउ I know you have this question. Notes कैसे बनाए जाएं, रिवाइज कैसे किया जाए और प्रैक्टिस कैसे किया जाए? That's a very important question. Notes, revision and practice. Can someone help us? Let me tell you. A very nice feature which is there with you for free. क्या है वो? ध्यान से देखो. This is Byju's the Learning app. You go select grade 7th. उसके अंदर जाओ लाइट चैप्टर में. Active Learn. ये है simulations. गेम खेलते खेलते you will learn a lot of things. Then comes revise. एग्जाम के लिए रिवीजन सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू गो एंड यू समरी सेक्शन देखो. मान लेते हैं यू हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, यू रिवाइज, तुम अटक जाते हो किसी कॉन्सेप्ट पे. लेट्स से यू गेट, है ना, कंफ्यूज बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर. बुक मार्क कर दो, यू बुक मार्क इट. All these other questions which have text solution and video solutions, यानी कि NCERT, exemplar, important books questions, all have been there with video solutions. और बुक मार्क सेक्शन में जहां तुम अटके थे, वॉट एवर यू बुक मार्क्ड, इट इज योर्स, पर्सनलाइज्ड है,
This is yours. So people, imagine you are traveling, you are going here and there, you are traveling to relatives. रास्ते में तुम्हारा मन किया रिवीजन करने का, फोन निकाला, खोला और रिवाइज कर लिया. This is your teacher. This is a self study वाला टीचर. ये टीचर सर पे डंडा मार के नहीं पढ़ाएगा. ये बोलेगा whenever you need me, I'm there for you. That is the study you want. तुमको वो नहीं चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएगा. वैसे थोड़ी पढ़ना तुमको. This type of features are very, very helpful to you. And by the way, all these are free features. Use them. How to get the app, how to register, I'll tell you by the end of this session. ध्यान से सुनना. चलो आगे आओ. Mirrors we have done. Lenses is also there in grade 7th. Convex lenses and concave lenses. अगर तुम कंफ्यूज होते हो सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम परेशान हो जाते हैं. At least learn one. If you remember, sir, concave mirror looks like this. What do? You make a symmetrical figure. Make a symmetrical figure. This becomes a concave lens. If you remember, convex mirror. अगर तुमको convex mirror याद है, make a symmetrical figure. ऐसे. ये बन जाएगा convex lens. ठीक है? Just a trick to make sure that you remember things. चलो आगे आओ. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, फिगर वाइज, शेप वाइज तुमको पता है. कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? बीच से मोटा होता है, साइडों से पतला होता है. कॉनकेव लेंस बीच से पतला होता है, साइडों से थिक होता है, राइट? अ कॉन्वेक्स लेंस इज थिक इन द मिडल एंड थिन ऑन द साइड्स. कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल एंड थिक ऑन द साइड्स. ऑलराइट, देन दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. Converging mirror was concave mirror. Converging lens is convex lens. Concave lens will be ulta, opposite. It will be a diverging, like convex mirror. That's the truth. So convex lens, the image formation, the properties are equivalent to concave mirror. Concave mirror और convex lens दोनों एक साथ काम करते हैं लगभग. कैसे? Look at this. Image formation की बात करें, if we talk about image formation in convex lens, when the object is very close, you will get, remember concave mirror, you will get big image, virtual image, magnified image, erect image, correct है ना? So when you keep your face very close to a concave mirror, what do you get? Sir, I get virtual, erect, magnified image. Same thing over here. अगर object दूर रखोगे, if you keep an object far from the convex lens, remember the concave mirror, क्या होता था? Sir, real inverted, size varies depending on object का position. Same thing. If the object is far away, real inverted depends on size. Size will vary. But if object is very close, virtual, erect and magnified. एकदम same है concave mirror की तरह से. ये दोनों properties. So this chapter is very important. Notes ढंग से बनाना, and I just told you how to make your own notes. तुम्हारे phone में तुम्हारे notes रहेंगे यार. Then we have uses. Uses क्या है? Lenses. Where do you use lenses? Specs, है ना? Binoculars, microscope, cameras, all of them use lenses. नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस. भाई कॉनकेव लेंस कैसा होगा? इफ कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस विल बी लाइक कॉन्वेक्स मिरर. इन्होंने ना ऐसे ऐसे दोस्ती, इन्होंने अपने दोस्त चेंज कर लिए. फाइन. कॉनकेव लेंस इज बिहेविंग मोर लाइक कॉन्वेक्स मिरर. क्यों? पीस लविंग. बोलता है आई विल नॉट ट्रबल यू, आई विल ऑलवेज फॉर्म व्हाट? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट किधर भी हो. Wherever the object is, doesn't matter. Virtual, erect and diminished image. Uses क्या है? Wherever you want to diverge the light, like flashlight, peephole, right? है ना? ठीक है? So all of this is concave lens. And last topic is dispersion of light. Dispersion मतलब splitting of light. Can light split? Yes. White light can split because white light is not a single color. Which experiment showed this to you? कौन बताया तुमको? This experiment, a Newton disc. If you make the 7 colors and you rotate the disc, it appears white. We have done this experiment, है ना? ये white लगता है, which proves that white light is a composition of 7 colors. Correct? अब where do you see 7 colors? और कहाँ मिलते हैं naturally? Rainbow. 7 रंग का इंद्रधनुष. Remember? In a rainbow you get 7 colors. कहाँ से आए? किसी ने तो split किया होगा. Yes. So a device which can split white light into 7 constituent colors is called as the prism. ये prism है जो कि split कर सकता है. Atmosphere में अगर rainbow मिला तो कौन split किया? Prism किया. But who is acting like a prism? Raindrops. We'll discuss in grade 10th. Human eye. Don't worry. So a device which can perform dispersion of light. Prism is the answer. Fine. Rainbow is because of dispersion of light. बहुत बढ़िया. Newton disc.
experiment to prove that light consists of 7 colors. ठीक है? All right. So people, with this we are done. Let me give you 2 homework questions and tell you how you can get all those features for you. Homework question की बात करते हैं. Give one use each of a concave and a convex mirror. This is a question for you. Next, which lens is used as a magnifying glass? Another question for you. I want the answers in the comment section. Now, let's come to the question we all want the answer for. All those features, all those amazing videos, how to make sure I have this teacher with me every time. मेरे को जब जरूरत पड़े उस टाइम ये टीचर मिल जाए. How to make this teacher a part of my life. Let me tell you, this is something we have taken care of. There's a link in the description, shop.byju's.com. कुछ नहीं है, एक बढ़िया सा स्टोर है एजुकेशन को लेके, राइट? दिस इज द बायजूस गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू. यू गो एंड सेलेक्ट योर ग्रेड. सेलेक्ट ग्रेड 7th. सेल्फ स्टडी पैक. दिस इज अ सेल्फ स्टडी पैक, राइट? दिस इज फॉर यू एक्टिव. अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से वी हैव डिफरेंट प्राइस. लाइक जून के लिए यू हैव 4,000. मे till May 2025 it is 12,000. If you just think about it, right now it is February. May 2025 तक within this I would say लगभग 14-15 महीने की बात हो रही है ना. It's coming out to be less than 1,000, लगभग 700 rupees per month. इससे महंगा तो तुम ट्यूशन पढ़ लेते हो, right? So all of this is yours. All the videos are yours. All the simulations are yours. सब कुछ तुम्हारे पास है और ये टीचर हमेशा तुम्हारी पॉकेट में रहेगा. जब तुमको जरूरत होगी it will be there to help you out. The silent teacher, right? The teacher will makes you self study क्योंकि that is the study which is the most beneficial. डंडा मार के पढ़ तो लोगे, पास भी हो जाओगे, अगले साल सब भूल जाओगे, कोई मतलब का नहीं है ना. खुद पढ़ना बहुत जरूरी है and that's why we have a self study pack. So people, this is for you. Go ahead, check this out, buy it out and inclusion क्या मिल रहा है तुमको? grade 6th free मिल रहा है till your May 24 in case you have to revise the previous class stuff, right? So all of this is for you on shop.byju's.com. With this we are done. Like this video if you believe whatever we told you it was helpful. Share this with your friends and subscribe to the channel for more interesting content. People will not stop and will not make you also be stop, है ना? तुमको रुकने नहीं देंगे हम. See you next time. Bye bye.